Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about blood. Let's have a look at the big picture. First of all, in this subsection we'll talk about the general features of blood. Secondly, we'll discuss the composition of blood in detail, and thirdly, we'll talk about the functions of blood. I have a question for you. A person is weighing 60 kilogram. What will be the approximate weight of his blood? A option is 1 kilogram, B option is 4 kilogram, C option is 5 kilogram, and D option is 10 kilogram. So basically जो blood का weight होता है, this is 1/12 the body weight. So 60 divided by 12, best response to this question would be 5 kilogram, that is Charlie. Another question, what is the normal pH of human blood? तो human blood की जो normal pH है वो 7.35 to 4.5 की रेंज में होती है. Anyways, A option 7 है, B option 7.2, C option is 7.4 and D option is 4.7. So best response to this question would be Charlie, 7.4. So let's talk about the general features of blood. First of all, कलर के लिहाज से ये रेड होता है, एंड सेकेंडली वेट, जो इसका जो बॉडी का इसका वेट इन द बॉडी ये 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वेट है. जैसे कि अगर एक 60 किलोग्राम का बंदा है तो उसमें जो ब्लड का वेट होगा दैट वुड बी 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट वी हैव गॉट द वॉल्यूम इन अडल्ट. तो एक अडल्ट के अंदर तकरीबन 5 लीटर खून होता है वॉल्यूम के लिहाज से, और इसकी जो पीएच है इट्स 7.4. प्रिसाइजली स्पीकिंग ये 7.35 टू 7.